So, so hello everyone. Today I have Sachin Kothari with me. Sachin Kothari has 11K followers on LinkedIn, and first of all, the most unique thing about this particular guy is he's not only a branding guy, but he's also a sales guy on the side as well. And apart from that, Sachin not only helps people build their personal brand on LinkedIn, but he also helps people to grow on Twitter as well. And apart from all of that, just like me, he also has a podcast show sort of a thing. And the name of that podcast is My Cryptic Show. In that particular thing, Sachin basically talks about things related to freelancing, entrepreneurship, and all those things related to it. So thank you for doing this, Sachin. And first of all, hope you are Thank you for doing having well. me. Yeah, yeah. Absolutely, absolutely. Yeah. So let's get started, and I have 8 questions aligned for you that might bring value to the audiences. So I'm Wow, just 8 questions. going to shoot the questions like straight away. Okay, Okay. So done, as we are done, done. moving towards the recession, do you think that personal brand on LinkedIn is much more stable than having a job? Why? See, personally, I think I won't differentiate job and personal brand. But since I've been doing personal brand since 2 years, so I'll support personal brand for me. See, I think what I have learned by having a personal brand is your personal brand should be very authentic. Based on your talent, your values, and the way you serve people, whether it's about business, whether it's about you're selling a content, whatever it is. So I'm not saying job is not stable, but I don't think people who do 9 to 5 job, they will be recognized by their personal brand because they are so much into their work, and whenever you connect with them, they don't get time for that much, if you talk to them. But I won't differentiate because see, I'm not doing any job. Maybe they're earning more than me. That's not okay. So I personally believe in personal brand because since 2 years it has helped me a lot. Creating a brand for myself, which I know that before 2 years, I was still confused with my life, what has to be done. I was pursuing my masters. I was giving an entrance exam for MBA. From giving an entrance exam to MBA, I have came across personal branding, helping people to get jobs on LinkedIn. And today I realized that what about the job I was about to do after 2 years of MBA. So it has a very good journey since 2 years, and I'll personally support my personal brand. So yeah, stability is also in job, but if you ask me, I'll go with personal brand for sure. Yep, yep, of course. And there are lots of people who are aspiring to build their personal brand on LinkedIn. So, how can one get started in building a Lot personal of people. brand? What do you have to say? See, I think I won't say that whatever you are doing on LinkedIn. So forget about LinkedIn. Whatever you're doing on Instagram, Facebook, there are a lot of social media apps. People are doing something on Instagram. I won't say that people like me, everybody is on LinkedIn. Some businesses on Instagram, they're doing something great. See, for me, I think if you particular ask me on LinkedIn, I think you have to be very much, consistent. You should have a consistency of your content. Like I won't say that every day at 9 o'clock you have to wake up and create a content, put it on LinkedIn. That's not the way you grow. Because absolutely, because if you're putting the same kind of content every day, I don't think people might connect with you with that comment section. And today I think you use much of that LinkedIn. You come across that comment, nice sharing, thanks for sharing, great insight. So these kind of Right. comments absolutely looks like they are doing a formality. You just want to show that yes, we are connected, but not we are connected in that sense. So I believe in having a consistency on LinkedIn and some other social media apps. Okay, so by consistency, it doesn't mean that you are talking about digital marketing. You're talking about uh, software engineering or DSA and whatever. There are a lot of people putting huge content on LinkedIn. So if you're putting it regularly again and again and putting the same thing,
you can by modifying the content. I don't think this is a very good way to grow. For me, I think what has worked for me when I was a beginner, I used to put informative contents like how do this in 4 days, do this in 5 days, it will work for you. But I don't think it was my bad because that doesn't work for me. For at least I joined in January 2021. Since it took me at least 4 to 5 months to think what has to be done on LinkedIn to create a personal brand. Because nowadays, if you create a LinkedIn account and you reach out to people, big accounts me as a person will not give any attention to that person because this person has just joined LinkedIn. He doesn't even know. He doesn't even have any mutuals. So it will take time. I will talk to him or her. But yes, if you're talking about job seeking, if he wants a job, I'll actually ask him to provide me your CV, email, resume, whatever it is. But if he's asking me to grow up on LinkedIn, I think I'll straight away say that you need consistency. You need passion about your content. And if you're putting a regular content the same basis, don't do this because I today right now I am understood that I post 2 times a day. But Hmm. crossels is must. I put crossels for beginners on LinkedIn, but not every day. If I'm putting on Monday a crossel, second day I'll put a meme, third day I'll put how to grow on LinkedIn in just one photograph. I'll create a Canva and just post it. Okay. If regularly if I put crossels, then my personal brand is not visible because they only know hey यार ये बंदा सिर्फ crossels ही बनाता है LinkedIn में और ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर. So for Hmm. experiment, you need to experiment the field. You need to experiment. You need to comment on people's, content. For example, if you have reached out to me, for what reason you have reached out to me? You have gone through my profile. You have seen this person is doing business. This person is selling a product. This person is doing, a growth on Twitter. So this person is very well, qualified for a podcast show. So I think consistency is important. But if you're putting a content, please fluctuate with it. Got it, got it, got it. That's a really informative answer, by the way. Like it would, I think it would definitely help a lot of people, like especially who are just starting See, out right actually, now. brother, it absolutely. See, actually, I've seen a lot of content on LinkedIn. Like they just, I don't know if this is a copied or not. I don't know. Hmm. But the way they frame their content, do this first one, Right, to second point, third point, fourth point, fifth point. At the end of the day, all the best. This is not the way you can motivate other people. You have to right, connect. You have to ask them what exactly they want. Exactly. right, right, right. Basically, you are sort of a copywriting part as well, addressing the right set of audiences, having a call to action, and those sort of format. That's what you are speaking about, I guess so. Right, right. Awesome. Absolutely. So now that you already have a match about like 11,000 followers on LinkedIn, do you feel that the follower count matters? Like, how do you feel about it right now? Yep. Uh, I think your questions are a little bit complicated because it might have been a very important for me. It might have been not important for 50K, 60K, isn't it? Right, 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 right. No, Okay. actually, Uh, the thing is, the reason behind asking this is there are lots of beginners who are starting out. The growth metric that they see is the follower count. yeah, But yeah, what they don't absolutely, understand is having a 10,000 followers and getting zero opportunities out of it just doesn't make sense. absolutely. So, what's the Okay, important metric that people now should I focus? exactly. Yeah, yeah. Now I get your good question. The question Yep. you asked me that having an 11K followers, still getting zero opportunities, I think your 11K is a waste, Right. isn't it? I started getting an approach from brands when I got 3K followers. That day I understood, okay, now the game has started for me on LinkedIn. Because I was, slumbering with the 6 months. एक नहीं होता भैया कुछ देखो ना कुछ हो सकता है तो भैया कुछ recommend कर दो ना मेरा प्रोफाइल भी Hmm. 3,000 हो गया है भैया. Hmm. तो एक वो वाला सीन और एक people are coming to me, yeah sir we want you to guest as a guest speaker. Okay, now I think today itself I have started my brand, and from today onwards I'll help all the person back because the day you reach out to people, that's okay. You have to reach out to people because as a beginner, what can you do? You have to reach out to mentors. You cannot get help, Hmm. absolutely. But Hmm.
at times happens that you have reached a very certain number of followers, 10K, 11K. Recently, 1 week ago, like I had a guy, he had 9K followers, and he said that I just posted a paid promotion post on LinkedIn, and he said that how did you get it? Like, do we have to approach people? I said, Hmm. yeah, you have to approach people, but I didn't approach them right now. I approached around when I was 2K or 3K followers. But if you are asking me, like, how can you approach them? I think you have built 9K followers. I don't think that's a very less amount of followers nowadays. So if that huge 9K followers, if you're not getting an opportunity from one person as guest speaker or whatever person when you have, then I think there are two reasons. First, you don't have any person brand. You're just coming, you're putting a content for those, and you're just going away. First reason. And second reason, you don't have a target audience कि यार मेरे को इन target followers या इन audience को grab करना है. My motive was to grab attention from mentors. 1 lakh people, 1 lakh follower people, 150K, 50K followers. And I think you saw my post, like, do you know Kisar Right. Hamid? Yeah. He had 170K followers on LinkedIn, and Hmm. I just saw a post. He was coming to my city. I just messaged him, so I really want to meet you. I Hmm. really want to meet you. Just meet. I just want to have 10 minutes of talk with you. He said, okay, sure, I'll do it. Hmm. So he reached out, he came out to our city, and he asked me to come this place or that place. So this is happening only by networking. If you have Right. very good communication skills, if you have created a very good content. क्योंकि देखो यार, एक 1,70,000 वाला फॉलोवर आपसे क्यों मिलेगा भाई? उसके पास 5 मिनट भी True. क्यों वो तुमको देगा? True. Absolutely. Just because he went through your profile, I saw my profile. It was 5 minutes ago. That person has viewed my profile. After that, he answered, "Okay, we'll meet you for 20 minutes." Okay, Hmm. wow. That means that if that person has viewed my profile, that means there's something, it got attracted and he wants to meet me. So see, Hmm. having followers is just about reach. I'm telling you, the number Yeah. of followers you increase, the number of visibility you increase. If you're talking about Got. reach, if you're talking Hmm. about if you put a content, if you get less number of reach, just because of your either your content is worst, or secondly, the audience which you have built don't trust you at all, because there's nothing called reach. Because many people say यार reach नहीं मिल रही मेरे को, content में रोज डाल रहा हूँ, बट ऐसा Hmm. नहीं होता है. एट टाइम्स क्या होता है ना, आप कंटेंट डालते हो लेकिन आपका कंटेंट रिलेवेंट नहीं होता है. वो फॉर द Right. सेक ऑफ इट दे जस्ट राइट इट, या नाइस फॉर शेयरिंग, थैंक्स Right. फॉर शेयरिंग. ये सब कमेंट्स अगर आपके आते हैं, दैट मीन्स दे आर डूइंग अ Hmm. फॉर्मेलिटी. एंड इफ दे आर Hmm. पुटिंग अ वेरी गुड रिप्लाई, दैट्स वेरी गुड Hmm. थिंग. So I think yes, followers do matters, bhai, but there are Hmm. two. I've given you two conditions. If you have 11K, even if you have 20K, if you're not getting any opportunities to help Right. other people, then it's a waste of time. Got it. Got it. And like, first of all, like the point you mentioned, like your content is irrelevant. There are lots of people who want to Absolutely. create content on LinkedIn, but they don't know where to start. Like some say that you have to express your feelings and all to be authentic, in order to have a human relation sort of a thing. And some say you have to Absolutely. be Absolutely. strategic about it, like you have to stick to a particular niche. So Yeah. what's the advice that you have for them? For whom? For people For creating content. basically, yeah, for people who don't know how to create content, or who just don't know that they should focus on the niche, or they should focus on the human part more. Like what's that? What's how does it work? Yeah. Got your question. Actually, this question I asked myself when I had 1K followers. बिकॉज 1K में भाई फट गई थी मेरी, Hmm, क्योंकि आप नए नए हो यार, आपको true. हर जगह जाके मैसेज करना पड़ेगा. भाई Hmm, भाई बहन, ऐसे कर करके, भैया दीदी, right. सर मैम, बराबर. कर करके 1,000 फॉलोवर आपको टालने पड़ेंगे. शुरुआत में Hmm, आपको झुकना ही पड़ेगा भाई. लेकिन बराबर. अब एक सवाल जो आपने पूछा अभी कि लाइक व्हाट Hmm, हैज टू बी पोस्टेड ऑन कंटेंट, ही ये सब कुछ होता है. किस बराबर. कंटेंट की तरफ जाने जाते हो? Hmm, तो I when I reached the 4 5K followers, I asked hmm, myself, like यार सचिन, मैं डाल तो रहा हूँ कंटेंट, यार लॉन्ग रन के लिए कैसे काम आएगा? पांच hmm, 5,000 तो मैंने कमा लिए, hmm, आगे और 5,000 कैसे कमाने? अगर यही right. कंटेंट डालता रहूंगा तो लोग बोर हो जाएंगे.
यार एक ही बराबर। कंटेंट डाल रहा है, वही सुबह उठ के वो 9 बजे वो दबा देता है, अपने को हम्म। पर्सनलाइज मैसेज भेज देता है, बोलो भैया लाइक करो फॉलो करो। हाँ हाँ। ये चीज हटाने के चक्कर में मैंने एक सोच ढूंढी कि हम्म। आपको एक ही वर्ड बोलूंगा, एक्सपेरिमेंट। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। God। यू हैव टू पोस्ट। अरे यार आप एक दिन मीम डाल दो। एक मीम में क्या होता है, आज के टाइम में मीम्स बहुत चल रहे हैं यार, मतलब रील्स जो भी इंस्टाग्राम में आते हैं, मीम डाल दो, उसके बेसिस हम्म। में आपको रीच मिल जाएगी, पीपल विल कनेक्ट विथ यू। ठीक है, फन हम्म। के लिए बोल रहा हूँ, देखो ये आपका काम नहीं है, यू आर नॉट अ मीम मार्केटर, बट यू आर पोस्टिंग इट राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ माइंड। ठीक है, राइट। आपका मोटिव दो ही रहना चाहिए। पहला, आपका जो कंटेंट है वो हेल्पफुल होना चाहिए। ठीक है, हम्म। जो भी आप कर रहे हो, इधर इट्स रिलेटेड टू पर्सनल ब्रांड कैसे बनानी है, या जैसे मैंने अपना चूज किया कि मेरे को ना बिगिनर्स को हेल्प करना, ये मेरा कैसे ख्याल है मैं बताता हूँ। हम्म। मेरे को एक दिन बहुत सारे जो छोटे छोटे अकाउंट नहीं होते जो 50-60 फॉलोवर वाले, वो हाँ। reach out कर रहे ओके। थे, भैया इसको कैसे करना है, भैया ये कैसे हाँ करना है। ठीक है, हाँ। मैंने बोला कि चलो ठीक है, इनको हेल्प कर दिया। अगले दिन फिर 10 और मेरे पास रिक्वेस्ट आए, कैसे करना है हम्म। भैया, कैसे करना है, बोलो ईमेल कर रहे थे, व्हाट्सएप का नंबर मांग रहे थे। समझा। तो उनको मैं धीरे धीरे हेल्प कर रहा था। करते हाँ करते करते मेरे को समझ में आएगा कि ना अभी के टाइम में लोग लिंक्डइन ज्वाइन कर रहे हैं, बट उन्हें ये हाँ। पता नहीं कि कंटेंट क्या पोस्ट करना है। आई हैव लिटरली समझा। टेल यू बडी Saira, हाँ हाँ। whenever a beginner talks to me, हम्म। his or her first question is, sir, how to grow followers? मैंने बोला भाई फॉलोअर्स तो ग्रो अपने आप थोड़ी हो जाएंगे, तेरे को कंटेंट तो डालना पड़ेगा। तू बराबर। बिना कंटेंट डाले कैसे फॉलोअर बढ़ाएगा, कोई टूल तो मैं बताऊंगा नहीं, बिकॉज दिस रबिश इफ आई टॉल्ड अबाउट द टूल्स। ऑफ कोर्स। बिकॉज अगर आप टूल यूज करोगे तो वो ऑर्गेनिक नहीं है, दैट्स ऑफ कोर्स। एब्सोल्युटली वर्स, दैट्स फेक। तो हम्म। फिर उनका समझ में अच्छा, यहाँ पे कंटेंट काम करता है। द डे रिकमेंडेशंस आने लगे, भैया आप बहुत हम्म। अच्छा समझा रहे हो, मैंने बोला चलो एक हम्म। काम करते हैं, ये लाइन पकड़ लेते हैं। इसमें क्या हम्म। होगा कि लोग जो नए जुड़ रहे हैं मेरे से, वो मेरे बराबर। से कनेक्टेड रहेंगे। जब समझा। तक उनके मेरे जितने नहीं हो जाते ना, तब तक तो वो कनेक्टेड रहेंगे भाई, क्योंकि बराबर। उतने नहीं हुए। जिस दिन बराबर। सचिन सर से ऊपर निकल जाएंगे ना, तब तभी देखेंगे हाँ। क्या बात होती है। ठीक है। तो बिगनर्स वाला चीज मैंने एक पकड़ा। और दूसरा, हम्म। मैंने जैसे आपने बोला ना कि कंटेंट क्या पोस्ट करें, ये हम्म। एक और सवाल आता है। एक जन ने हम्म। तो बोला भैया आपने तो बोल दिया कंटेंट डालना, क्या डालें। अरे भाई ये भी बराबर। मैं बताऊं तेरे को, कंटेंट भी क्या डालेगा वो मैं बताऊंगा, फॉलोवर्स कैसे डालने वो भी मैं बताऊंगा। एक काम कर, तू मेरे को अकाउंट दे दे, मैं संभाल लेता हूँ। वही वही देखो वही। ये कितना बार हुआ है मेरे साथ। हम्म। मतलब उनको चाहिए आज मैं आया हूँ मेरे 1000 के हो जाए। अरे हाँ। भैया मेहनत करनी पड़ेगी, कंटेंट बराबर। डालना पड़ेगा। उनसे मैंने पूछा कि तुम करते क्या हो, तो किसी ने बोला कि मैं सम पीपल आर बिजी विद इंटर्नशिप, सम पीपल आर बिजी विद स्कूल कॉलेजेस, व्हाटएवर जो भी है। मैंने बोला समझा। वो तो चल पार्ट ऑफ लाइफ है भाई, कॉलेज तो तेरे को जाना पड़ेगा, लेकिन बराबर। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाई डू यू वांट पीपल टू नो, किस वजह से हम्म। तू जानना चाहता था। किसी ने बोला कि भैया ना मेरे को कॉपी राइट लिखना बहुत पसंद है, मेरे को हाँ फ्रीलांसिंग करना बहुत पसंद है। तो मैंने हाँ। बोला तू 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 जो सीख रहा है ना, वो ही डाल दे। ये तो बराबर। लिंक्डइन है, यहाँ पे तो तेरा कोई मजाक उड़ेगा नहीं। अगर अपने बराबर। इंस्टाग्राम फेसबुक में डालते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, जितने भी अपने जो फिजिक जो बाहर मेरे दोस्त है ना, वो मेरे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन ऑफ मेरे कोर्स। लिंक्डइन वाले फ्रेंड जरूर मेरे को अप्रिशिएट करें। ऑफ कोर्स। आज ऑफ मैं तेरे कोर्स। पॉडकास्ट चैनल को प्रमोट कर हाँ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तू हाँ मेहनत कर रहा है। लेकिन तेरे हाँ जो बाहर के दोस्त है ना, अरे यार बेकार है, कुछ हाँ। नहीं है, ये आधा घंटा का सेशन रखता है, कुछ आई नहीं, नो। टाइम पास कर रहा है। अरे ठीक है बेटा, यही चीज है। हाँ हाँ। तो यही चीज है, आपको क्या है ना कि समझना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि भाई कौन बराबर। सा कंटेंट मेरे लिए काम कर रहा है। ये सवाल हम्म। मेरे मेंटर से भी यही था कि मैं हम्म। कंटेंट क्या डालूं। उन्होंने मुझे हम्म। बोला तेरे को जो अच्छा लगता है करने में, मजा जिसमें आता है ना, वो डाल। और सर हम्म। बता रहा हूँ, मैंने यही डालना चालू कर दिया। बिगनर्स को हेल्प करने में मेरे को मजा आ रहा है, और हम्म। कंटेंट हेल्प बनाने में काम आ रहा है। और पर्सनल ब्रांड समझा। तो देखो अपने आप बन जाएगी जब कंटेंट डालो। बराबर। बराबर। और ये सब को छोड़ के काफी लोग होते हैं जिसको ये समझ नहीं आता कि अरे मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कोई भी फील्ड के अंदर। तो ये लोग ऐसे सोचते हाँ। हैं कि अरे मैं सिंस एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं कंटेंट क्रिएट करना मतलब सही भी है कि नहीं, क्योंकि कोई मेरे को क्यों ही सुनेगा बिकॉज मैं एक्सपर्ट थोड़ी हूँ। तो उसके लिए क्या कहना है आपको? एब्सोल्युटली। हम्म। आई थिंक मैं बोलूंगा मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं तो सच बताऊं तो मैं भी अभी सीख रहा हूँ, लेकिन मैं हाँ। इतना भी नहीं सीख रहा हूँ कि मैं अपने आप को कैपेबल नहीं समझूं कि यार मैं हम्म। लिंक्डइन के लायक तो नहीं। क्योंकि देखो right। यार, मैं क्या चीज बताऊं, अगर जिनके लाख फॉलोवर भी है ना, वो लोग हम्म। भी अभी कुछ सीख रहे हैं।
मैं बराबर बता दे रहा हूँ, उनके पास सारी नॉलेज नहीं है। बराबर। अगर वो मैं उनके पास जाता हूँ जस्ट बिकॉज उनके पास 1 लाख फॉलोअर्स हैं, तो मैं हम्म। कनेक्ट हो रहा हूँ। वैसे अगर बराबर। उनको पर्सनली अगर तुम इंटरव्यू लो ना, उनकी 4 लाखनेस पता चल जाएगी, अरे यार मेरे को तो ये नहीं आता, अरे यार मेरे को तो ये नहीं आता। एक्सपर्ट कोई हम्म। नहीं है। इट्स हम्म। ऑल अबाउट अ स्टार्ट भाई, मैं बता दे रहा हूँ। लोगों को बराबर। स्टार्ट करने में इतनी दुख रही है ना, कि हम्म। लोग सोचते हैं कि यार 4 लोग क्या बोलेंगे, यार तू किस हम्म। लाइन में आ गया, यार तू ये क्या हम्म। कर रहा है। ये सबसे बड़ी हम्म। मेंटालिटी होगी सबके अंदर में। हम्म। या उनके पता है, मैं को चीज बताता हूँ। एक और मेरा एक बिगनर है, मेरे को हम्म। पूछता है, चलो उसने मुझे पूछा कि सर कंटेंट क्या डालना है, मैंने बोला तू ये डाल। हाँ। भैया कंटेंट डाल तो दूंगा, रीच मिलेगी क्या, मतलब हम्म। रीच मिल जाएगी क्या। बराबर। अरे यार, अब तू रीच भी, यार एक काम करो, मैं कमेंट कर दूंगा, मेरे जो ग्यारह हाँ। हजार फॉलोवर व्यू कर दे। ठीक है, बराबर। ठीक है हाँ। भैया कर देना। मैंने अच्छा, सही बात है, मैं ही कमेंट कर दूंगा, सब कर दूंगा। तो हाँ। इसमें सबसे बड़ा पता है, सबके अंदर वो क्वेश्चन है कि यार ये कर दूंगा तो चलेगा नहीं यार, ये कर दूंगा तो होगा हम्म। नहीं यार। दैट्स द हम्म। मेन प्रॉब्लम। सी यू हैव हम्म। स्टार्टेड योर पॉडकास्ट चैनल, ठीक हम्म। है, आपने स्टार्ट किया, आपने मुझे वो बोला कि आई एम स्टार्टिंग हाँ। समथिंग न्यू, आई वाज वेरी हैप्पी कि यू हैव स्टार्टेड समथिंग। एटलीस्ट यू राइट। आर नॉट आस्किंग पीपल कि यार करूं कि नहीं करूं। तो वो हाँ। इसमें हाँ। एक्सपर्ट नहीं है। आप होस्ट, हम्म। अभी आज आप होस्ट कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा बराबर। कि लोग आपको अप्रोच करेंगे, या सैरम को लेते हम्म। हैं, इज अ वेरी गुड पॉडकास्टर, क्यों नहीं। राइट। तो आपको राइट। एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है कोई भी फील्ड में, आपको जस्ट हम्म। एक्सपेरिमेंट करना है और उसी बराबर। से आगे बढ़ना है। जो भी आपको पसंद है, वट एवर यू लव, वट एवर यू हम्म। लाइक, जस्ट हम्म। पोस्ट इट। कंटेंट मैटर्स अलॉट, नॉट, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप एक्सपर्ट हो। राइट। राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, लिंक्डइन में अगर आप जाओगे ना, काफी जगह पे देखोगे कि लाइक अगर हिंदी में कोई कंटेंट लिख रहा है वहां पे, बीच में वो कुछ कुछ लोग रहते हैं ना जो हिंदी हाँ में लिख हाँ। देते हैं। इंग्लिश इंग्लिश रहता रहेगा, शुरू से इंग्लिश हम्म रहेगा पूरा, फिर बीच में हिंदी रहेगा। तो हम्म ये लोगों के लिए काफी लोग हम्म बोलते हैं कि अरे हिंदी में क्यों डाल रहा है, लिंक्डइन है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। हम्म। बट व्हाट आई थिंक इज कि एब्सोल्युटली। भाई वो बस एक कम्युनिकेशन का जरिया है, हिंदी बस एक लैंग्वेज है थ्रू विच दे आर कम्युनिकेटिंग, दे फील दैट बेटर। तो कम्युनिकेट। तो क्या मतलब ऐसा कुछ है क्या कि इंग्लिश में ही बात करना चाहिए अगर कोई नया चालू कर रहा है, अभी कंटेंट क्रिएट करना चालू करना चाहता है, तो ऐसा कुछ है क्या कि उसको इंग्लिश को स्टिक करना चाहिए या हिंदी स्टिक करना चाहिए, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। आज मैं हम्म। सच बता देता हूँ, हम्म। मैं नाम नहीं लूंगा उसका। वो ठीक है। एक बंदा है, वो कंटेंट हिंदी में ही लिखता है, उसके ओके। 40,000 फॉलोवर है भाई। मैं हाँ। इंग्लिश में बक रहा हूँ कंटेंट, हाँ। मैं इंग्लिश में हाँ। कंटेंट बक रहा हूँ, मेरे सिर्फ 11,000 है। अब तू बोलेगा भाई क्या बोल रहे हो भाई आप, उसके 40,000 है, वो हिंदी में डालता है, वो पोएट्री हाँ। डालता है, वो एक दिन पोएट्री बनाता है, वो डालता है, उसके लाइक्स आते हैं 100। मैंने बोला भाई एक काम करते हैं, आज से पोएट्री चालू करते हैं, लेकिन मैं ओके। नहीं करूंगा, क्योंकि ऑफ मेरा कोर्स। वो कंटेंट नहीं है भाई। हम्म। आपको हाउ कैन आई फॉलो हिम, बिकॉज ही आया, उसका पैशन है पोएट्री लिखना, वो डाल रहा है, हम्म। उसको मजा आ रहा है, और उसको हम्म। मजा आ रहा है तो ऑडियंस को भी मजा आ रहा है, उसकी पोएट्री अच्छी है। ट्रू। मैं आपको बताऊंगा, लिंक भेजूंगा, उसकी पोएट्री बहुत सही है। हम्म। तो उस बेसिस में वो हम्म। कमा रहा है यार, क्यों नहीं कमा बराबर। रहा। अब मैं अगर बराबर। उसको देखूंगा, अरे यार वो हिंदी में पोएट्री लिख रहा है, चलो एक काम करते हैं, मेरे को भी 30,000 कमाने हैं फॉलोवर, आज से पोएट्री चालू, सब पर्सनल ब्रांड बिगनर सब छोड़ दूंगा। नहीं, ऐसा हाँ। नहीं होगा भाई, ऑफ कि कोर्स। आपको ऐसे पता कंपेयर नहीं करना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हो कि यार ये बंदा ये डाल रहा है, तो इसके वो आ रहे हैं, देखो एट टाइम होता है कभी कभी कि यार ये बंदा मीम डाल रहा है, इसको इतने रीच मिल रही है, मैं हम्म। एक इंफॉर्मेटिव डाल रहा हूँ, लोग मिल ही नहीं रही है। हाँ। ट्विटर पे क्या होता है ना, आप ट्विटर यूज करते हो भाई, आई यू अवेलेबल ऑन ट्विटर, कैन यू या टेल। मतलब एक्टिव नहीं हूँ मैं जितना लिंक्डइन में हूँ, बट ठीक है मैं हूँ, ओके। मतलब एटलीस्ट आई एम प्रेजेंट या। ओके, या। बट अब सी व्हाट हैपेंस ना, वहां पे भी 3 4 कंटेंट चलता है, नॉट हम्म। लिंक्डइन के जैसे नहीं, वहां पे थ्रेड्स बहुत चलते हैं। तो राइट। एक दिन क्या हुआ कि एक बंदे ने थ्रेड डाला, उसके हम्म। 3,000 फॉलोवर थे, एक थ्रेड हम्म। के चक्कर में उसके 7,000 हो गए। ट्रस्ट मी damn। बडी, everybody has started putting thread, राइट। everybody. This राइट। is so dump of people that हम्म। just because he has put that thread, वो वायरल हो गया हम्म। भाई, तो मतलब जरूरी नहीं कि हम्म। तेरा भी वायरल होगा। ऑफ अब कोर्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है ना सोसाइटी के अंदर, हम्म। कि यार ये बंदा कर रहा है, चलो ये काम करते, इसमें पैसा बहुत है, ट्रू। यही चीज हम्म। है। ऐसा कुछ नहीं है, आप इंग्लिश डालो, हिंदी डालो, मेन हम्म। मोटिव यही है कि आपका जो कंटेंट है वो हम्म। कैसा हम्म। है। अगर आप हम्म। कुछ भी डाल रहे हो, इररिलेवेंट डाल रहे हो, दैट्स यूजलेस। हम्म। आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश मराठी तमिल कुछ भी चले। समझा समझा।
एंड सो द लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि Okay, finally we are in eighth. यप 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 सो मैं Okay, लास्ट क्वेश्चन okay. एक पूछना चाहूंगा कि जो लोग हाँ. को लाइक काफी लोग हैं जो जॉब हंटिंग कर रहे हैं फिलहाल लिंक्डइन के थ्रू, तो वो लोग को इंटरव्यू कैसे लैंड करेंगे वो लिंक्डइन के थ्रू, लाइक या इजी अप्लाई करना चाहिए, आउटरीच, लाइक क्या क्या करना चाहिए उन लोग को? You're talking about how to get jobs on LinkedIn? राइट, या आई एम नॉट फ्रेमिंग हाउ टू गेट जॉब्स ऑन लिंक्डइन एक्चुअली, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि इंटरव्यू कैसे लैंड करेंगे लिंक्डइन के थ्रू। इंटरव्यू तक, इंटरव्यू या कैसे? ओके, समझ हाँ गया. ओके, ओके. हाँ। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि ना यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रोफाइल. पहला बात, ठीक है. हम्म आप प्रोफाइल में अगर आप काम करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मैं अपनी टाइम की बात करूँ ना, कि मेरे को ना ये जब कोविड का टाइम आया था ना, मेरे को डिजिटल हम्म मार्केटिंग में बहुत मन था. ठीक है. हम्म और कोविड के टाइम में तो बाहर जा नहीं सकते थे, इट वाज ऑल लॉकड अप. क्या करना क्या करना, लिंक्डइन एक अपॉर्चुनिटी दिया मेरे को. लेकिन सवाल मेरा यही था कि भाई कैसे सीखें और कैसे इंटरव्यू तक जाएं. ठीक है. तो यही सवाल अब तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ. क्या होगा ना कि आपको अपनी प्रोफाइल बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी अगर लिंक्डइन के थ्रू करना है. क्योंकि यहाँ हम्म बाहर में क्या होता है ना, वो आपसे सीवी मांगता है, रेज्यूमे मांगता है. आप क्या करते हो, मेल कर देते हो, वो देखता है, जवाब देता है, वो ठीक है. लेकिन अगर आपको लिंक्डइन से कुछ पाना है तो आपको अपनी प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी रखनी पड़ेगी. नॉट बेसिस की, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो प्रोफाइल है, अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम के लिए जाऊंगा ना, रिक्रूटर मेरे सीवी को फाड़ के फेंक देगा कि भाई तू लिंक्डइन पे क्या कर रहा है, तेरे को इंजीनियरिंग का जॉब चाहिए, एकदम भी रिलेवेंसी नहीं है, सॉरी वी आर ट्रू। नॉट, वी वोंट टेक यू. बट हम्म क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई भी फील्ड में जॉब चाहिए ना, उस फील्ड में ना आप ऐसे अब स्किल्स अपडेट कर लो. ठीक है. दूसरी बात, अपना जो अबाउट सेक्शन, अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है, वहां पे ओपन टू हम्म वर्क का एक वो आता है, आप वो हाँ लगा लो. हाँ ताकि इससे हाँ क्या होगा ना, इवन इफ रिक्रूटर इज नॉट रीचिंग आउट टू यू, इफ अ पर्सन हु नीड्स वैकेंसी हायरिंग्स करते हैं ना, तो वो प्रोफाइल चेक करते हैं कि यार ये ओपन टू वर्क है, ही इज अवेलेबल फॉर जॉब, लेट्स टॉक टू हिम और हर. ठीक है. वो राइट। एक आप कर सकते हो. तीसरा, आपका जो अबाउट सेक्शन है ना, उसमें आप ये डालो कि आप काम कर सकते हो. आप ये मत बताओ कि मैं कितने घंटे कर सकता हूँ, क्योंकि राइट। काम जब आपके पास आएगा उसके बाद हम्म आप बात करो कि मैं पार्ट टाइम करूंगा, फुल टाइम करूंगा, क्या करूंगा. बहुत लोगों ने हम्म अबाउट सेक्शन में लिख के रहेगा ओपन टू पार्ट टाइम जॉब. कभी आपको रिक्रूटर आपको ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ना आपने बाउंड्री बना दी है कि ये बंदा राइट। पार्ट टाइम ही करेगा, फुल टाइम अगर इसको अगर हम देंगे भी ना तो ये बंदा करेगा ही नहीं. ये राइट। चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम. ठीक है. हम्म तीसरा और चौथा मैं बोलूंगा कि ना आप अब मैं बता रहा हूँ कि आप इंटरव्यू तक कैसे जा पाओगे. ठीक है. हम्म आपको क्या करना है ना, एक सर्च आता है. ठीक है. हम्म लिंक्डइन पे सर्च में, वहां पे आपको रिक्रूटर मैनेजमेंट लिखना है. ठीक है. हम्म उस बेसिस में जो रिक्रूटर, जिस फील्ड में आपको रिक्रूटर चाहिए, उससे आप कनेक्ट हम्म कर सकते हो. ठीक है. हम्म और कैसे कनेक्ट करोगे, या तो देखो, अगर आपके पास अच्छा वो है, प्रीमियम अकाउंट है लिंक्डइन पे, तो आप राइट। पर्सनल मैसेज भेज दो. और अगर प्रीमियम अकाउंट नहीं है, एक नॉर्मल अकाउंट है, तो आप हम्म ईमेल कर दो उनको. ठीक है. देखो, हम्म रिक्रूटर बहुत बिजी रहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए ईमेल के लिए बैठे हैं कि यार ये बंदा राइट। ईमेल भेजेगा तो देखूंगा. बहुत से लोग राइट। उन्होंने ईमेल भेज के रखा है. थोड़ा टाइम हम्म लगेगा, अब एक वीक लगेगा, 10 दिन हम्म लगेंगे. तो हम्म जब वो आपसे कनेक्ट करेगा, तो हम्म आप उनके टाइम को नॉलेज करो. ठीक है. राइट। आप राइट। अपनी डिमांड्स मत रखो पहले. तो पहले अपने हाँ। अगर आप डिमांड्स रख दोगे तो वो उस बेसिस में आपसे बात करेगा. अब ये देखो हम्म कि वो उनको क्या चाहिए कंपनी में आपके लिए. ठीक है. समझा। उस बेसिस में आप लैंड कर सकते हो. और अपनी जो हम्म सीवी है, जो रेज्यूमे है, वो आप अपडेट करके रखो, ताकि जो भी हम्म रिक्रूटर आपको रीच आउट करे, आप ईमेल कर दो और साथ साथ अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल भी भेज दो. क्योंकि टाइम्स हम्म क्या होता है ना भाई, हायरिंग होती बहुत है लिंक्डइन पे, लेकिन बहुत लोगों बराबर। को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, बहुत नहीं बराबर। मिलती है. क्योंकि क्या होता है ना, एट टाइम्स पीपल वांट फुल टाइम जॉब, मिलता नहीं है, पार्ट टाइम जॉब मिलता बराबर। नहीं है. बट वेरी गुड क्वेश्चन आपने पूछा है यहाँ पे, क्योंकि हम्म बहुत लोग जॉब के लिए भटक रहे हैं, मेरे से आते हैं ट्रू। बात करने. मैं उन्हें यही हम्म समझाता हूँ कि आप रीच आउट करो. जरूरी नहीं है हम्म कि वो आज ही ये कल में जवाब देगा. बराबर। आप बराबर। बैकअप ले लो ना. आप 4 रिक्रूटर हाँ को भेज दो, बराबर। 10 दिन के अंदर किस एक में तो फंसेगा कम से कम. बराबर। बट एक ही चीज बराबर। बोलूंगा, अपनी जो प्रोफाइल है वो हम्म आप प्लीज अपडेट रखो, जो हम्म फील्ड में आपको जाना है, ताकि हम्म फॉर एग्जाम्पल रिक्रूटर को ये नहीं लगे कि वो टाइम पास कर रहे हैं. ठीक है. बराबर। awesome awesome so thank you so much for doing this, और लाइक बहुत ज्यादा मतलब
ओवरलोड हो गया रहेगा काफी लोगों को ये चीज इतना पूरा सुन के, अगर पूरा सुनेंगे तो, because there's too much Absolutely, of information in this absolutely. particular thing, and I think that everyone should get started creating content, and because it And I think makes. Hmm, the exactly the yeah, yeah. best part about your मैं बता रहा हूँ best part about your podcast is the way you ask question. ये पता Hmm, है लाखों लोगों का 10,000 या 15,000 लोगों का यही सवाल रहता है कि LinkedIn पे they are getting stuck with these kind of questions. So I hmm, am hmm, feeling hmm. very happy कि इस वीडियो के थ्रू ना खाली अगर मैं एक लिंक भेज दूंगा ना कि भाई ये वीडियो देख लो, True. उनको सब समझ में Hmm, आ जाए कि एग्जैक्टली करना क्या है. एक एक true. एक दो क्वेश्चंस आते हैं. यू हैव चोजन सो वेरी गुड क्वेश्चंस. इतना डीप Hmm, आपने hmm, घुसे हो आज के अंदर में. तो hmm, इट्स hmm, फील वेरी गुड कि आप जितने भी क्वेश्चंस है ना उनके मन hmm, में hmm, सब hmm, क्लियर हो जाए. hmm, 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 hmm. Thank you so much. Really my pleasure to have you here. And थैंक I'm यू, थैंक यू. looking forward. I'm looking forward to people's comments down in the comment section. Like क्या सीखा उन्होंने, क्या नहीं सीखा, like क्या चीज cover नहीं हुआ इसके अंदर, सब कुछ मेरे को like एब्सोल्युटली. feedback kind of a thing. I require that. So thank you so much. But no issue. If Yep, anybody has a question in the comment section, I'll definitely reply them. sure. I have no Yep, कि भाई मैं उसको डीएम में लूंगा, कंसल्टेंसी sure, कॉल करूंगा, sure, बिल्कुल नहीं. Straight sure. away I'll answer them in comment section. Really, really awesome. So thank you everyone for listening to this particular podcast. And I hope that you really learn something and do something about it after learning it. So, yeah.